हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। दिस इज यूआर और आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार वीडियो लेके आया हूं। अंत तक बने रहिएगा। प्लीज वेट टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज द वे यू लुक एट some scripts, HUL, Hindustan Unilever in particular, and its family members, from FMCG, MNC category. सो चलिए देखते हैं। आज ये स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी ऑफ आवर फैमिली। इन आवर फैमिली माय ग्रैंडफादर obviously used to struggle a lot to make the family, the two ends meet, जो प्रोवर्ब है। तो उनको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि फैमिली बहुत ही बड़ी साइज थी। लेकिन उन्होंने थोड़े जितने भी पैसे बचाए, ऑल दोज मनी दैट इज सेव्ड, ही वाज somehow alert and investing in buying shares of हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। तभी वो नाम से माना जाता था ये कंपनी को। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसे तो नहीं था। व्हेन यू कंपेयर दैट अमाउंट विथ व्हाट you and me do today, and you and me possibly also do in swing or positional trades। लेकिन जो भी उन्होंने किया, he passed it on to his children, my uncles, aunts, and my father included। So what happened is, obviously, these people, all of them benefited a lot. But over a period of time, Hindustan Unilever started actually getting rusted. If you see, look at the charts, Hindustan, this is the 20 moving average on the weekly chart of Hindustan Unilever. And 20 moving, it is not actually respecting 20 moving average in a simple manner, because it breaks, it goes up, it breaks। So it is not an easy script to trade। हाँ, अगर आपने ये स्क्रिप्ट को यहाँ पे बाय किया होता और बैठे रहे हो तो बात अलग है। बट दैट काइंड ऑफ पेशेंस यू विल हैव only if you are having good amount of capital in your hand। People would not have a large size of capital, may find it very difficult uh, to stay within the same script for a long period of time। और मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ कि अगर हमने इस स्क्रिप्ट में हम बने रहते थे, in especially in the last 2 years, what would have happened? Now, I got active in the stock markets in the last 3 4 years, and in the last 2 years in particular. So I was trying to find a way in which we can actually leverage what is happening in Hindustan Unilever, because I knew at that time that I can actually make a covered call strategy, or that is going long in future, and then short a call at the higher value and कीप अर्निंग। जैसे कि बोलते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन सेलर्स बोलते हैं रेंटल इनकम इसके पर ले सकते हो, लेकिन वो सब काफ़ी सारा झंझट वाला काम है। एंड स्पेशली इन द करंट सिनारियो वेयर मार्जिन रूल्स हैव बिकम वेरी स्ट्रिंजेंट, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर a retail trader to do all those things। एंड स्पेशली रिटेल ट्रेडर को तो चलो फिर भी वो समझ लेगा, कुछ करके भी वो कर लेगा काम। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, ये फायदेमंद हो सकता है। इज इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू द रिटेल इन्वेस्टर इफ ही कीप्स मनी आइडल इन द शेयर्स ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो I investigated a lot, and we found that there is some opportunity which is available। And what it does is that it gives you downside protection also in case the HUL shares go below a certain value, and then upside in line with the market movements, in line with what the share prices of HUL is, it gives a consistent return। So what happened is that about exactly 2 years ago, in the month of January, uh,
my father's holdings in Hindustan Unilever, we moved to this particular new avenue of investment, as I call it. So this happened the entire, the movement of his Hindustan Unilever portfolio was completed on 15th February. और तभी हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्राइस थी 2255. इंसिडेंटली आज की क्लोजिंग प्राइस इज 2261. you know so though I have written this 19th January, I can change it to today's price, which is 2261. तो ये आपको सीधा जवाब देता है कि 2 साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने खाली 5 रुपये की मूवमेंट दी है. इफ यू आर सिटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट. Now you will say, nahi, nahi, because many of my uncles also have this script, and they are still holding this in the form of equity shares. So they are saying, अरे हमारा तो घर ही हिंदुस्तान यूनिलीवर से चलता है. हाँ, उनके पास शायद उतनी क्वांटिटी में शेयर्स होंगे, बट I went back and checked the records also when I did this study of the new avenue of investment. But HUL had not been giving good amount of return even then. And in the last 2 years, these are the dividend payouts that it has given: 55 or 56 rupees per share in the last 2 years. तो ये हिसाब है 15 फरवरी को 2255 था हिंदुस्तान लीवर की प्राइस. 22 जनवरी 2021 को द प्राइस वॉज 2409. So it gave a return of 6.83% per annum, which is not enough, less than what Nifty or Bank Nifty ETF would have given you. And today's closing price has given a return of only 2.39%. ये भी गलत है एक्चुअली, क्योंकि ये तो 5 रुपया ही हो गया, तो ये मैं चेंज कर देता हूँ. But this is what has happened: 2.39 in relation to 2020. So this is going to be very absolutely zero kind of thing. So ये हाल है. और ये if you compare with 21, obviously this is down by 6%. So हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर मैंने पैसे 1 साल में, मुझे 6.25% का या तो 6% की मुझे लॉस हुई है हिंदुस्तान लीवर में. क्या ये इन्होंने 6% मुझे डिविडेंड दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं. 1 लाख रुपये का समझो मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता हिंदुस्तान यूनिलीवर में, तो द प्राइस एट विच 2255 के प्राइस पे मैंने 44 शेयर्स मुझे मिले होते, एंड द प्राइस वुड हैव बीन 106. दैट इज एन एप्रिसिएशन ऑफ 6.83% एज ऑन 22 जनवरी. एंड एज ऑन 14 जनवरी जब भी मैंने वर्किंग किया था, तभी इसकी प्राइस थी इतनी. तो ये मुझे 0.27% का एप्रिसिएशन दे रहे हैं. ये जो 2261 है, ये 20 जनवरी आ जाएगा यहाँ पे, आज की तारीख में आ जाएगा ये. सो अगर आपको 2 साल में सिर्फ 266 रुपये मिले, एंड यू विल से नो 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 नो, आई ऑल्सो रिसीव्ड डिविडेंड. ओके, हाउ मच डिविडेंड you received? Let us see. You received a dividend of this much: 1042 and 1419. So 56 into 44 का आपको डिविडेंड मिला. वो डिविडेंड मिला 2464 रुपीज, प्लस आपको 266 रुपीज का गेन हुआ. सो 266 is your gain, and your total appreciation in respect of Hindustan Lever is 2730 or 2.7 or 0.27%. उतना हो गया, देखा आपने. तो ये क्या आपको ये ठीक लगता है? एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी मूव्ड टू दैट स्ट्रेटजी. ये देखिए यहाँ पे, या सो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज, and 2.73 in the last 2 years is the gain that we have made. Definitely this is less than savings account gain in any of the banks. So what we had done is that we had
moved this the portfolio to an alternative mechanism through which as on 1st January 2021 we were able to get a return of 13.58% as against 6.83 if we had kept in direct equity. And as on 1st January 2022, क्योंकि ये मंथली रिपोर्ट है तो ये मंथली रिपोर्ट अभी मंथ शुरू खत्म नहीं हुआ है, तो जनवरी की शुरुआत में एंड विच इज़ फेयरली कंपेरेबल विथ द लास्ट ईयर द combined gain was 28.51, and if you combine these two also it is only 8%. But आपको मालूम है कि आज की तारीख में actually it is a negative return, almost negative return, because 2255 and 2261 there is hardly any difference in the pricing. And if you look at the Hindustan Lever chart, the price may go down further because आज एक बहुत ही नेगेटिव कमेंट उनके सीईओ ने की है. टुडे इज 20th January, द डे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग. तो उन्होंने बोला है कि रूरल सेक्टर्स में देयर आर प्रॉब्लम्स, सो ही हैज आस्क्ड फॉर गवर्नमेंट सपोर्ट, which is very rare. Now, there may be certain people who are watching this video, and I have a detailed note here as well explaining the logic and the intent, background, intent, outcome. जो मेरा जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट में किया है. तो ये अगर आपको टाइम नहीं है आपके पास, तो यू नीड टू एक्सप्लोर दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, यू कैन डीएम मी आइदर यूजिंग वाया माय ट्विटर हैंडल, और इस वीडियो के कमेंट्स में आप डाल सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए. आपकी ईमेल आईडी वगैरह दे दीजिए तो हम आपको इंटरेक्ट कर सकते हैं. ये देखिए, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं है हम, नाइदर मी नॉर के आर. So we are sharing our experiences and our learnings in the market, and this video is purely for information and educational purpose only. We are not trying to sell or promote any kind of strategy or anything like that. We are only sharing how we got benefited by being alert and aware about what is happening. हाँ, एक बात जरूर है कि अगर कोई ट्रेडर होता, कोई ट्रेडर भी देख रहा है, तो वो बोलेगा नहीं, इससे तो ज्यादा मैं पैसा कमा सकता हूं बाय सिंपली फॉलोइंग द ट्रेंड. यस, दैट पर्सन इज राइट. इफ यू हैव अ स्ट्रेटेजी which say if you keep buying over 20 moving average, and ये देखिए कि ये 20 moving average को जब भी तोड़ता है तो उतना दूर नहीं जाती है ये स्क्रिप्ट. ये देखिए 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही रहती है. तो शायद इफ यू चेंज दिस 20 मूविंग एवरेज टू 30 मूविंग एवरेज, possibly, I'm just giving an example, let's see if it can. No, it will create complication. You know how to change it, so you can do that kind of testing and follow this trend, right? So, or you can have your own way of shorting the market. ये यहाँ पे स्पिनिंग टॉप जैसा आ गया तो मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा, तो I have already gained 700 rupees almost from the high. All that kind of stuff you can do if you are very active in the market. You can also do your own strategies, but the strategy that we have outsourced is where we are not paying anything to the executor because they get in their own way, and neither we are looking at the share prices. अभी ये बात अलग है कि हम मार्केट में हैं तो हम रोज हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्राइस देखते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ बाय वी गेट अ रिपोर्ट विच सेज ओके सो मच इज योर आरओआई ऑन दिस स्ट्रेटजी. एंड द बिगेस्ट थिंग इज डाउन साइड प्रोटेक्शन भी है, जो एक आम आदमी, रिटेल इन्वेस्टर और अ पर्सन हु इज नॉट फेमिलियर विद द मार्केट intricacies may not be able to do so. So this is it, my friends. There is a lot to talk, but वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है. आप ये पढ़ लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ये आपको टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है, आप भी ये वर्कआउट कर सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो this is very simple stuff, and I hope you like this video. I will wait to read your comments on the video as well as this post, which will be pinned to this video once it is posted on the investing.com.
Okay, friends, see you in the next video with one more interesting topic. Until then, keep enjoying life.